Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the review of ADME processes. These are simply called as the pharmacokinetics of the drug, and the pharmacokinetics of the drug simply means the absorption, distribution, metabolism, and the elimination. So, in the coming slide, we will discuss briefly about these parameters, and more discussion, more detailed information will be provided in the coming chapters. So, let's begin with the first slide that speaks about the what is ADME. ADME again, it is these are the pharmacokinetics parameters, and pharmacokinetic is what the body does with the drug कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, दैट इज कॉल्ड एज द एडमी, और फार्माकोकाइनेटिक्स के जो पैरामीटर्स हैं दैट इज कॉल्ड एज द एडमी. और बॉडी बेसिकली absorb the drug, uh, and after absorption distribute the drug, and after distribution body metabolize the drug, and then after metabolism the body eliminates the drug. So all these processes, they are basically conducted by the body on the drug. ये सारे processes जो हैं बॉडी कंडक्ट करती है, जिसमें absorption है, distribution है, metabolism है, and the elimination is there. So this is the brief overview of these processes. So when drugs, they are administered through extravascular route, then they are absorbed. तो जब भी हम ड्रग को देते हैं, they are basically absorbed. And if the drug, it is given through intravascular route, which simply means that drug is given directly into the blood vessels, then there is no process of absorption. So extravascular route, it involves the absorption, and the intravascular जो हमारा route है, that means the drug is given directly into the blood vessel, then there is no process of the absorption. तो इंट्रावेस्कुलर जो रूट है हमारा, उसमें क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ड्रग डायरेक्टली गोज into the blood vessel. So this is intravascular route, and after extravascular routes there is absorption, and then drug go into the portal circulation, and then it enters into the systemic circulation. तो एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट में स्पेशली ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रग अब्जॉर्ब होने के बाद पोर्टल सर्कुलेशन और फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है. इन केस ऑफ इंट्रावेस्कुलर रूट, ड्रग इज डायरेक्टली गिवन into the blood vessels. So once the drug is in the blood vessel, it is distributed in the tissues and the organs. We will discuss these things. This is another pharmacokinetics का जो पैरामीटर है. और फिर then there is excretion and the metabolism, and both these excretion and the metabolism, that is, they are called as elimination. तो इसको हम elimination कहते हैं. So we will discuss about all these processes, which are basically conducted by the body on the drug: absorption, distribution, excretion, and the metabolism, or both they are called as the elimination. So let's begin. Let's start with the first parameter, which is called as the absorption. Absorption is simply defined as the movement of drug from its administration site into the systemic circulation. तो ड्रग की जो absorption वाइज डेफिनेशन है, whether it is given by oral route or subcutaneous route, जो भी extravascular route है, it is called as the movement of drug from the administration site into the systemic circulation. And there is no absorption process in case of intravascular route, means intravenous या intra-arterial route के form में there is no absorption. Drug directly goes into the systemic circulation. One more difference जो exist करता है in case of extravascular route, especially the oral administration, उसमें जो drug है
that absorption from the side के एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से जो अब्जॉर्प्शन होती है इट गोज इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन. ओरल की है, जब ओरल रूट से हम ड्रग को देते हैं, सपोज यू आर गिविंग द ड्रग through oral route, and once the drug is given, it goes into the it goes into the portal circulation. ये portal circulation में जाती है, and then it goes into the liver. ये लीवर में जाती है, और फिर पोर्टल सर्कुलेशन से लीवर में, और फिर ये लीवर से इट गोज इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो ओरल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ओरल रूट से पोर्टल सर्कुलेशन में, पोर्टल से फिर लीवर में, और लीवर से फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग जाती है. सो दैट इज कॉल्ड एज द मूवमेंट ऑफ ड्रग व्हेन इट इज गिवन बाय ओरल रूट. तो पोर्टल में, फिर लीवर में, एंड देन इट गोज इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. लेकिन दूसरे जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट है, जस्ट लाइक इंट्रामस्कुलर रूट, तो ड्रग इट गोज फ्रॉम द मसल इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. So this is the minor difference in case of absorption from the GIT into the portal blood in case of oral administration. Otherwise, drug goes into the systemic circulation. And distribution, this is second parameter of ADME process, that is called as distribution. And distribution wise अगर हम इसकी definition देखें, this is the reversible movement of drug from the blood or from the plasma into the body tissue, and from the body tissue into the plasma or the blood. So ये reversible process है. और जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द ब्लड फ्लो टू दैट ऑर्गन. के एक ऑर्गन के अंदर अगर ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो ये डिपेंड करती है कि उस ऑर्गन की तरफ ब्लड फ्लो कितनी है. तो जितनी ज़्यादा ब्लड फ्लो होती है उतनी ड्रग ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है. लाइक द किडनी हो गया, इसकी तरफ ड्रग की ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिकॉज इट इज़ हाईली परफ्यूज ऑर्गन. इसके कंपैरिजन में वो स्किन जिस तरह होगी उसकी तरफ ब्लड की सप्लाई कम होती है, so less drug is distributed in the skin. So that is the difference. So greater is the blood supplied to the organ, greater will be the drug distribution into that organ or the tissue. And next is after the drug is absorbed, it is distributed and it binds with plasma protein or tissue protein. तो ये ड्रग जब अब्जॉर्ब होती है तो इट बिकम बाउंड विद द प्लाज्मा प्रोटीन. अगर ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होती है तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि वो प्लाज्मा के अंदर ही रहती है, टिश्यूज में नहीं जाती. But if the drug is in bound form with the tissue protein, तो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है. So the drug has got high volume of distribution. तो जितनी ज़्यादा प्लाज्मा के अंदर या प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ड्रग की बाइंडिंग होगी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इतना कम होगा. जितनी ज़्यादा ड्रग की बाइंडिंग टिश्यू प्रोटीन के साथ ज़्यादा होती है, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होता है. एंड द नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन वाइज एक ब्लड परफ्यूजन. फिर ड्रग की बाइंडिंग जो है वो डिपेंड करती है. जितनी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग उतनी कम डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी ज़्यादा टिश्यू की प्रोटीन बाइंडिंग उतनी ज़्यादा ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होती है. तो प्लाज्मा प्रोटीन बेसिकली दे मेक द ड्रग अवेलेबल इन द प्लाज्मा, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती. Another is the membrane permeability of the drug molecule. अगर ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है तो मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, वो भी मैटर करती है. एंड दिस इज द फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल that makes it permeable to the plasma protein. तो जितना ड्रग के मॉलिक्यूल ज़्यादा परमिएबल होते हैं उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो इसलिए जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं उनकी परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन की ज़्यादा होती है, इसलिए वो ड्रग ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है. So this is all about the distribution. We will discuss all these things in the coming lectures about the distribution, volume of distribution, and how it affects the other pharmacokinetics के जो parameters हैं उसको कैसे ये affect करता है. Okay, so the next is about the metabolism. Once the drug is distributed, it get metabolized.
एंड मेटाबॉलिज्म की जो डेफिनेशन है, इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ द ड्रग इनटू अनदर केमिकल फॉर्म। लेकिन इसकी एक और डेफिनेशन भी है, इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ लिपोफिलिक फॉर्म ऑफ द ड्रग। इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ लिपोफिलिक फॉर्म ऑफ द ड्रग, I mean the lipo sorry, this is the conversion of lipophilic form of the drug. Lipophilic means lipid loving form of the drug into hydrophilic form. ये एक दूसरी इसकी जो जनरलाइज डेफिनेशन है, दैट इट इज द कन्वर्जन ऑफ लिपोफिलिक फॉर्म ऑफ द ड्रग इनटू हाइड्रोफिलिक फॉर्म, that is the metabolism, or it is the conversion of drug from one form to another form. और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब ड्रग लिपिड से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होती है तो ड्रग बिकम इनएक्टिव ज़्यादातर केसेस में। इन सम केसेस इट बिकम लेस एक्टिव, in some cases it become active, and in some cases the drug become more active. तो कुछ exceptional cases ऐसे exist करते हैं. So these are the example where the drug become active, like procainamide, this is the active form. Propranolol, 4-hydroxypropranolol, diazepam itself is active, but this is also an active. तो बाज़ का drug खुद active होती है, metabolite भी active होता है. So these are some of the exceptional cases, बट आई वुड से कि जो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है, इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ लिपिड सॉल्युबल फॉर्म इनटू वाटर सॉल्युबल फॉर्म। सो जो कंपाउंड बनता है आफ्टर मेटाबॉलिज्म, दिस इज कॉल्ड एज द मेटाबोलाइट। जब कन्वर्जन हो जाती है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो जाता है, द रिजल्टिंग कंपाउंड इट इज कॉल्ड एज द मेटाबोलाइट। इट इज कॉल्ड एज मेटाबोलाइट। So that is called as the metabolite, इसको हम metabolite कहते हैं. So after metabolism, uh, then there is a elimination. तो drug की elimination होती है, and elimination, it is the irreversible removal of the drug from the blood or the plasma involving the process of metabolism and the excretion. तो उसके बाद elimination होती है. Now elimination is the combination of again मेटाबॉलिज्म एंड द एक्सक्रीशन. तो मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन को इट इज कॉल्ड एज द एलिमिनेशन, एंड इट इज द इरिवर्सिबल रिमूवल. कैसे होता है मेटाबॉलिज्म को एलिमिनेशन कहते हैं? क्योंकि ड्रग होती है, पेरेंट ड्रग होती है, वो मेटाबोलाइज जब होती है तो वो अपनी एक्चुअल जो केमिस्ट्री होती है, इट लूजेस दैट केमिस्ट्री, दैट्स व्हाई इट इज irreversibly removed. वो ड्रग चेंज हो जाती है, दैट्स व्हाई एलिमिनेशन इज सॉरी मेटाबॉलिज्म इज एलिमिनेशन. और एक्सक्रीशन, इट इज द रिमूवल ऑफ इंटैक्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग, अनचेंज फॉर्म. जैसे ड्रग हम देते हैं, देयर इज नो मेटाबॉलिज्म, इट इज एलिमिनेटेड एज सच. और मोस्ट ऑफ द ड्रग दे आर वाटर सॉल्युबल, जो कि एक्सक्रीट होते हैं, एंड द किडनी इज द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसमें रोल प्ले कर रहा होता है. सो एक्सक्रीशन, इट इज द रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी इन अनचेंज फॉर्म. हमारे पास बहुत सी ड्रग्स की एग्जांपल है, like the penicillins, antibiotics, they are excreted out. So what are the organs that are involved in drug elimination? These could be the kidney, this could be the liver and the lungs. किडनी मेनली हमारी ड्रग की एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, जो वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और एक्सक्रीशन मीन्स अनचेंज फॉर्म में. अगर ड्रग हम बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं और ऑलरेडी वो वाटर सॉल्युबल है, सो देयर इज नो मेटाबॉलिज्म ऑन दैट ड्रग, बिकॉज ड्रग इज ऑलरेडी वाटर सॉल्युबल, सो इट शुड बी एक्सक्रीटेड आउट. ये एज सच एक्सक्रीट होती है. But if the drug is water soluble, it is converted into another form that is called as the metabolite, and this water soluble metabolite, it is eliminated through the kidney. That is the metabolite हमारा kidney से eliminate हो जाता है. This is the elimination of the metabolite. Metabolite के लिए हम excretion की term use नहीं कर सकते. Another is called as the liver. Liver हमारा जो है, it is the main site of metabolism, जो कि lipid soluble drugs को metabolize करता है. So kidney liver is the another main site of drug metabolism. और फिर किडनी इज द साइट ऑफ यू कैन से द एलिमिनेशन, और उसमें वोलेटाइल ड्रग्स को ये एलिमिनेट करता है, जस्ट लाइक यू कैन से द एनेस्थेटिक्स, स्पेशली द गैशियस एनेस्थेटिक्स जो है, दे आर एलिमिनेटेड थ्रू द किडनी. और द ड्रग आर आल्सो एलिमिनेटेड थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क इनटू द इन्फेंट्स में भी एलिमिनेशन होती है ड्रग की. सो लीवर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म और द एलिमिनेशन, क्योंकि एलिमिनेशन इज you can say it is excretion plus metabolism. So liver is responsible for the elimination,
Kidney are responsible for the elimination, but kidney is responsible for the removal of water soluble form, and lungs are also responsible for the excretion of low general anesthetics, the volatile anesthetics especially. So there is difference between the metabolism and the excretion. Both they involve the chemical conversion of drug in the body, especially जो drugs के लिए हम use करते हैं, that is called as metabolism. Metabolism is specific for the drugs के लिए हम use करते हैं. So that's why biotransformation, it is a broad term. It involve metabolism, drug की metabolism भी इसमें आ जाती है, और भी जो body के अंदर processes involve होते हैं naturally, जो drug mediator convert होते हैं, there is biotransformation process. So biotransformation, it is a broader term, और जो metabolism की term होती है, it is used for the biotransformation of the drugs, especially the enzymatic जो वो है biotransformation है, that is called as the metabolism, and it involves the liver enzyme. इसमें liver के enzyme होते हैं. तो very briefly, the biotransformation, it is the broad term. The metabolism, it is a यानी कि इतनी broad term नहीं है, और it involves the ड्रग मेटाबॉलिज्म बायोट्रांसफॉर्मेशन में, जिस तरह हम कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर बायोट्रांसफॉर्मेशन होती है, या ह्यूमन बीइंग में देयर इज बायोट्रांसफॉर्मेशन, इट इज अ ब्रॉडर टर्म. ओके, so this is all about the ADME processes or the pharmacokinetics parameter. Pharmacokinetics की definition ये है कि what the body does with the drug, और उसमें अब्जॉर्प्शन आता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन आता है, उसमें मेटाबॉलिज्म आता है, और उसमें एलिमिनेशन भी आता है, और समटाइम एक्सक्रीशन भी उसको आप कह सकते हैं. बट एलिमिनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म एंड द एक्सक्रीशन. So there is difference between metabolism and the biotransformation, and here is the another term that is called as disposition. That means the distribution and the elimination. So elimination and the distribution both together, they are called as the drug disposition. So the disposition is another term that includes the elimination and the distribution. So this is the whole summary of today's lecture, where the absorption is the process where the drug enters the body from the site of administration and gets absorb into the systemic circulation. तो systemic, लेकिन oral की form में मैंने जिस तरह आपको बताया portal circulation में जाती है. रूट्स हमारे लिए जो oral route है, sublingual है, rectal है, ये सारे इसमें absorption involve होती है. So the drug goes into the systemic circulation, और लेकिन जब हम IV देते हैं तो drug is directly going into the systemic circulation. After absorption into the systemic circulation, the drug become distributed, which means the reversible transfer of drug to and from the tissue and the organ. और ये डिपेंड करता है उस ऑर्गन की तरफ ब्लड की फ्लो कितनी है, बाइंडिंग प्रोटीन्स, प्लाज्मा के साथ ड्रग कितनी बाइंड होती है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, टिश्यू प्रोटीन के साथ, तो ये डिपेंड करता है. अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होगी, लेस डिस्ट्रीब्यूट होगी. टिश्यू प्रोटीन के साथ बाइंड होगी, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी. ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास CNS एक्टिंग ड्रग्स हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं इसमें. So permeability of the tissue membrane, अगर ड्रग की फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी है कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, so more distribution will be there. So these are the some of the organs that are associated, like the brain is the organ where the drug is highly perfused tissue, such as the हार्ट के अंदर, फिर मसल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, फैट्स के अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है. The third one is the metabolism or the biotransformation. Biotransformation is a broader term, and it is the conversion of the lipid soluble drug into water soluble form. मेजर जो साइट है मेटाबॉलिज्म की, दैट इज द लीवर. और हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं बहुत सी के. इन ज़्यादातर केसेस में हमारे पास जो ड्रग होती है, इट इज कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव, बट सम ऑफ द केसेस में एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है. Excretion is the irreversible loss of drug in unchanged form में, जो ड्रग की एक्सक्रीशन होती है, जो इंटैक्ट फॉर्म उसको हम कहते हैं, कि जैसे ड्रग बॉडी में एज एडमिनिस्टर की जाती है, इट इज एलिमिनेटेड एज सच. और एंटीबायोटिक्स अच्छी एग्जांपल है हमारे पास. Then the elimination, that is the combination of excretion and metabolism, and the disposition is the combination of distribution and the elimination. So with this
I will conclude the today's lecture. So if you have any question, just mention in the comment section, and like our channel, Dr. Muzaffar Pharma Talks. So subscribe it and share with your friends. Thank you.